सीधी से सिंगरौली, इसका पहले अलाइनमेंट सीधी से बरगवा तय किया गया था, बाद में इसको परिवर्तित करके सीधी से गोंदवाली कर दिया गया। इस अलाइनमेंट परिवर्तन के कारण क्या है और क्या इससे लागत बढ़ी है अथवा घटी है? धन्यवाद। अगर बढ़ी है तो इसके लिए धन्यवाद। जिम्मेवार कौन? धन्यवाद। सभापति जी, अवश्य ये प्रश्न मध्य प्रदेश का है, ये प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश का है, मूल प्रश्न से लगा हुआ नहीं है। फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि ये प्रोजेक्ट ललितपुर, सतना, रीवा, सिंगरौली, ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट न्यू लाइन है देश की, 541 किलोमीटर की। इसका अलाइनमेंट जैसे जैसे ज़रूरतों के हिसाब से और विशेषकर इंडस्ट्री और पैसेंजर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं और राज्य सरकार के साथ चर्चा करके अलाइनमेंट बीच में चेंज किया गया, उसके कारण कॉस्ट भी बढ़ी। लेकिन इस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस अभी बहुत अच्छी है और इस वर्ष जो रिकॉर्ड एलोकेशन किया गया मध्य प्रदेश के लिए, उस रिकॉर्ड एलोकेशन के कारण इस प्रोजेक्ट में और भी प्रोग्रेस तेजी से होगी, ये मेरा विश्वास है। और अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती तो माननीय सांसद महोदय मुझे कभी भी संपर्क कर सकते हैं, उसको हम समाधान करेंगे। धन्यवाद। माननीय राम विचार नेताम जी। मेरा माननीय मंत्री महोदय से मध्य प्रदेश से ही कट करके हम छत्तीसगढ़ गए, वो इसमें पर सवाल मध्य प्रदेश का है। तो अधिकार बनता ही है महोदय। छत्तीसगढ़ के किन किन मार्गों का सर्वेक्षण किया गया? क्या उन मार्गों में चिरमिरी बरवाडीह का लाइन भी सर्वेक्षित है? उसकी स्वीकृति की क्या स्थिति है? धन्यवाद। आप दे सकते हैं सर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 37 माननीय हर्षवर्धन सिंह डूंगरपुर। मेरे तो ओपन डोर्स है। माननीय हर्षवर्धन सिंह डूंगरपुर नॉट प्रेजेंट। माननीय मंत्री जी। सर, आंसर इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। श्री केजे अल्फोंस। Sir, thank you for this opportunity. Even though I have start question listed today, but I know it would never come up. Day for Please yesterday, so put same, your question. it had the same fate, sir. Thank you so much. Sir, I live in the heart of Delhi, and I had one of these national carriers. That was my telephone. I couldn't get a call, so I had to come out to the garden to make a call. Sir, today, past 1 week, I've been trying to make calls. I have possibly the biggest telephone operators in the country, and I use their phone. I can't get a telephone call through at all. Sir, in Cochin, where I go and live in the government guest house, it's right in the heart of the city. I can't get a call through. Sir, is it a problem with the spectrum, or is it a problem with these service providers? Sir, Honorable Minister, would you kindly take steps to rectify this, please? Thank you. प्रश्न सर ट्राई से संबंधित है। ट्राई में ऑलरेडी क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए एक स्पेशल सेल है। मैं माननीय सांसद महोदय से निवेदन करूंगा उस सेल में अपनी कंप्लेंट रखे और ट्राई उसके ऊपर विचार करेगी। डॉक्टर वी शिवदासन। Whether government has any share in Vodafone, then if government sector one company is here. If yes, then please explain the details. सर, टेलीकॉम सेक्टर एक बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है सर, पिछले कई वर्षों से। और उसके पीछे कारण क्या है वो हमारे मित्र अच्छे से समझते हैं। मैं किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूं। इन परिस्थितियों के कारण, गुजरने के कारण आज डिस्पाइट हेवी ग्रोथ इन द टेलीकॉम सेक्टर, बहुत सारी कंपनियों की बैलेंस शीट, बहुत सारी कंपनियों की आर्थिक हालत में एक समस्या आई। अब सरकार का रेवेन्यू कहीं पे कॉम्प्रोमाइज न हो, सरकार का रेवेन्यू बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज न हो, फिर भी एक तरीके से एक ऐसा सॉल्यूशन निकले जिसमें इंडस्ट्री स्ट्रेंथन हो सके, ये सब विचार करके बहुत ही सोच समझ के, इतना मेरे ख्याल से जो सितंबर के रिफॉर्म्स की बात जो आप कर रहे हैं, that's one of those very well thought out, really going deep into the problem and bringing up a solution where government's revenue is not compromised at all. With that philosophy, those reforms were taken out. In that, one of the options which was given to the industry was that the interest which you have to pay for the 4 years, that interest can be paid either in you pay it or you give your shares in lieu of that.
So that's the thought process with which that option was given. 3 companies have exercised that option, sir. We are examining the letters that they have given. Thank you. Shri Sujit Kumar ji. Sir, I'm well aware of the various initiatives taken by the government to spread telecom revolution in remote and rural areas of India. Sir, the BharatNet project would be a good example, which is implemented to provide broadband connectivity to all the panchayats. But sir, even today, a quarter of the Gram Panchayats in the KBK districts of Odisha, which is largely tribal dominated and Naxal infested, are unconnected. They do not have telecom connectivity despite repeated reminders and Question. address in this house. So my request and question to Honorable Minister is, will he come out with a special scheme to expedite telecom connectivity in the KBK districts of Odisha? Thank you. 7,000 new telecom sites in the country, especially in areas which are not connected. And I'm so glad that Odisha, because of various historical reasons and because of some of the areas which are very difficult, especially the forested areas, KBK areas, which Honorable Member has referred to, 3,933 sites were sanctioned for Odisha. It's a great thing. I request Honorable Member that please approach the state government so that the sites can be easily given, can be quickly given. We can start raising the tower. And BharatNet, sir, in Odisha, the BharatNet project is implemented by the state government. I'll request the Honorable Member once again, please work through the state government so that the implementation can improve. Implementation is not at all satisfactory. Thank you. Question number 38, Maniya Kanak Mehla Ravindra Kumar ji. Number 38. Maniya Mantri ji. Railway, it's related to railway. So the answer is 38. 38, sir. Answer is laid on the table of the House. First supplementary. Sir, as per item 18 of the schedule 13. Sorry, question hour is over. One more, sir. Question Whether hour is there over. any supplementary. Please, no. Sorry. Whether there is any time-bound Statements of the program is- Public Accounts Committee, Sri Bhuneswar Kalita ji, please lay. Sir, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name. The reports of the Public Accounts Committee 2021-22, serial number 1 to 19. Thank you, sir. Thank you. Manya Prasanna Acharya ji, discussion on the motion of thanks on President's address. Thank you, Deputy Chairman, sir, for giving me the occasion to speak out my mind about the address of the Honorable President of India to the joint session of both the House in the beginning of this budget session. Sir, it is customary that the Honorable President of India will address both the Houses at the beginning of the session. And it is also very clear that whatever the President speaks on this occasion, it is only a speech prepared by the government and approved by the cabinet of this country, sir. But sir, I must thank the President because at the beginning of his speech, one very important thing the Honorable President has said, and he has said that I salute all the great personalities for their contribution in the development journey of our country in these 75 years of independence. I put emphasis on this very sentence of the Honorable President because there are some people in this country who refuse to recognize the contribution of all those great leaders who laid the foundation of a new India after independence, including the first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru. There are a whole of leaders in this country who not only fought for our independence, but after independence, they took over and laid the foundation to build up a new India, a prosperous India, a progressive India, a secular India, a India belonging to all sections of the people, all sections of the citizens. Therefore, sir,
I think the President has very rightly, at the outset of his speech, has saluted all those great personalities for their contribution in the last 75 years of our independence. Sir, for one thing, I appreciate the attitude of this government, Modi's government, that in some respect, they are taking a very nationalistic approach. And sir, it is a very, very good decision that Netaji Subhash Chandra Bose, we all know about his contribution to the freedom struggle of this country. And many people think that had Netaji been alive and had Netaji been in the helm of the affairs of the country after independence, the shape of our independent India would have taken a different direction. But unfortunately, that couldn't happen. And unfortunately, sir, there are some people in this country, I don't want to indicate who are those people, in order to eulogize some other leader, I think the contribution of Netaji and some other leaders of Netaji were very conveniently forgotten. People refuse to recognize their contribution to this country. So this government has very rightly taken a decision. I therefore compliment the Honorable Prime Minister that the Republic Day celebration will start from the birthday of Netaji, that is 23rd of January every month. It is a very, very welcome decision this government has taken. So another very important decision and very impressive decision this government has taken to observe Bir Bal Divas on 26th December in the memory of sacrifice of Sahib Dazad, the son of the 10th Guru Govind Singh, for their unparalleled sacrifice during the Muslim era. Sure, there are some other Bal Birs in this country which sacrifice is memorable, that cannot be forgotten. I will cite one example from my own state, Odisha. There was a boy, his name was Baji Raut. He was an 11, 12-year-old boy. And he bravely faced the bullet of the Britishers that time. He refused, he was a boatman. His father was a boatman. His father was ailing. Therefore, he took charge of the boat. And when the British soldiers came to the river bank and asked the boy to open the boat to take them to the other side so that they can go and invade a village and arrest some freedom fighters, this 12-year-old brave boy, Baji Raut, refused. And he was shot at, and he became a Shaheed. So there are some other such Bal Birs in the country. My point is, all the sacrifice history of such Bir Bals of this country should be collected, and memorials should be constructed in their memory, and history should be give proper place to the sacrifice of such people. Therefore, it is a very good step that the government has started observing the Bir Bal Divas. I therefore also compliment this government, sir. Sir, the Honorable President, if you go to para 22 of the speech of the Honorable President, he has said about the farmers, empowering the farmers of this country. Very, very welcome thing, sir. The President has mentioned about empowering the farmers and rural economy of the country. I'm not going to delve in detail about the rural economy, sir, because I know you will not give me time. I have very limited time. And other members have very elaborately yesterday and day before have explained what is the rural economy in this country now. And the President has also very complimented the farmers, sir. Despite pandemic, farmers produced more than 30 crore tons food grains, and 33 crore tons of horticulture produced in 2020-29, despite the pandemic situation, sir. And agriculture export reached a record level and registered a growth of more than 25%, valuing rupees 3 lakh crore. This is the contribution of the farmers of this country. In the question hour, we were discussing about Swaminathan Commission, minimum support price pertaining to the farmers, sir. Sir, if the farmers can contribute so much to this country, in return, what is getting? What the farmers is getting? Farmers' income have not been doubled. This is the promise of this government that by 2022, farmers' income is doubled. I will ask personally to the government,
Can the government say that by now it has been able to double the income of the farmers? Can they say it? No, sir. The farmers of the income has not yet been doubled. Sir, had the farmers' income been doubled, you'll be astonished to know that why the farmers of the country are still committing suicide every day. Sir, it is not my report. It is the report of the National Crime Record Bureau. It is NCRB data. And according to the NCRB data, as many as 42,480 farmers and daily wagers committed suicide in 2019. It is 2019 report, not the latest report, which is an increase of 6% from the previous year. So every year the number of farmers' suicide is going on. Why? If they are getting the MSP, now in the question hour I put the question, and other honorable members also put the question about MSP. I think government gave a very evasive reply. Government is not coming out with a reply whether they will bring a law in this house to ensure MSP legal coverage to MSP. Government refused to do that, and that is one of the demand of the agitating farmers of this country, sir. And most of the farmers in this country, they are small and marginal farmers, and they are committing suicide. The farm laborers are committing suicide. If the economic standard of the farmers, the government has been able to increase, then why the farmers is compelled to go for committing suicide? Has the government an answer for this, sir? So this is a very pertinent question, sir. The plight of the farmers, I don't think, had the farmers been in a happy condition, in a very sound economic condition, thousands and lakhs of farmers would not have been gone for agitation in the border of this country. Sir, just now the railway minister is very much present here. I will compliment the railway minister that he has given a good amount of sanction to the different projects of Odisha, sir. I compliment him. Sir, but one thing, sir, why state motherly attitude is being shown to Odisha, my own state? Sir, I will give only one example. Our CM has repeatedly asked for unification of all railway assets over Odisha state under East Coast Railway headquarters at Bhubaneswar. But we are told that zones are not formed on state boundary line. The reply of the government is, zones are not formed on state boundary line. Okay, sir, I agree. Zones are not formed on state boundary line. But now the South Coast Railway zone has been formed on state boundary line. And at which cost? At the cost of the East Coast Railways. Why this discrimination, sir? When our request has been turned down, then why is in some other state you are going for state level boundary and constituting the railway zone, sir? Sir, you have taken away a portion of Andhra Pradesh from East Coast Railway. Then why Raurkela and Jharsuguda, etc.? This is our old demand. Now Jharsuguda and Raurkela, it is in Chakradharpur division outside Odisha. So our request is, you bring Raurkela and Jharsuguda and other areas, constitute a separate division, merge it with the East Coast Railways. The reply is, railway zones are not constituted on state boundaries. If it is not constituted on the basis of state boundaries, then why it happened in Andhra Pradesh? So therefore, sir, we feel that in some respect, discrimination is meted out to my state, Odisha, sir. Sir, the President has mentioned about forming two All India Institute of Medical Sciences in Jammu, one in Jammu and one in Kashmir. I welcome it, sir. It is a very, very good decision, sir. But, sir, there are some other areas in this country where health services are very poor. I will cite one example. It is Sundargarh in Odisha, sir. It is a tribal-dominated area, and it is adjacent to Jharkhand, which is also a tribal-dominated area. So, the request of my state government, my Chief Minister Naveen Patnaik has been all the time requesting the central government to open an AIMS Institute in Sundargarh, sir. I welcome the decision of the government that two AIMS are being opened, one in Jammu and one in Kashmir. But some other areas in the country are there, mostly dominated by the tribal population, where health services are poor. So therefore, our request is to open
aims at Sundargarh as well. Sir, there are some states in the country, Odisha, Bihar, Jharkhand, they are mining state, mine producing state, mine bearing states, sir. And Government of India is collecting a clean environment cess. Earlier per ton, they were collecting 200 rupees. Now it has been enhanced and they are collecting 400 rupees per ton collected by the center. Sir, Odisha government have requested for renaming the cess as environment and rehabilitation cess. Sir, we are suffering. The mine-bearing states are suffering. Our environment is polluted. Our trees are cut. And Government of India is collecting the cess in the name of clean environment cess. And we, this mine-bearing state, we do not get a single pie on that. So my Chief Minister Naveen Patnaik has always been requesting that rename it as cess, environment and rehabilitation cess, and earmark at least 60% of coal for the coal-bearing states. This has been our request. Government of India is not considering. Sir, cess and surcharge. Sir, the share of this gross tax revenue for the Union government increased from 7.5% to about 19% in the last 20 years. Cess and surcharge. Government of India is imposing cess and surcharge on petroleum, on petrol, on diesel, on liquor product, and some other products also. And the increased trend of center to rely on cess and surcharge denies the states their rightful share in tax devolution. Because the cess and surcharge amount, it is not going to the divisible pool. And the states are not entitled to get a share of it as per the recommendation of the Finance Commission, sir. So our request to the central is that the revenue thus generated should form of the divisible pool so that the concerned states can get a benefit of that thing. Sir, during the pandemic, okay, the central government spent a lot of money. The state government as well spent a lot of money for that, sir. But from that fund will come. So that this is our genuine and rightful demand. So I urge upon the central government to consider. Sir, the Honorable President in his speech has mentioned about women empowerment. And the President says, women empowerment is one of the top priority of the government. Sir, it is just contrary of the fact, sir. Sir, okay, Beti Badhao, Beti Bachao, Beti Padhao, lot of slogans are being there, sir. Sir, I will say only one thing, sir. Okay, Triple Talaq bill was passed by this house. And we said that among the minority communities, Muslim communities, lot of superstitions are there. We have to deal with that. And everybody supported the Triple Talaq bill, sir. Sir, I will put one question here. What happened in Sabrimala in Kerala? What was the judgment of the Supreme Court? What was the stand of the Bharatiya Janata Party? There are two All India largest national political parties. One is Bharatiya Janata Party, one is Congress Party. What was their stand on that? On the one hand, we say about women emancipation. And on the other hand, we support preventing the women from entering into a table. We are not even prepared to go by the judgment of the Supreme Court. What was the Supreme Court judgment? Supreme Court held about Sabrimala that any exception placed on women because of biological differences violates the Constitution. It violates the right to equality under Article 14 and freedom of religion under Article 25. Why this double standard? On the one hand, we say about women emancipation. On the other hand, we prevent the women from entering into a temple and pray and offer their prayer to the Lord. So this is double standard, sir. So I think we should, about women reservation bill, sir. Sir, this house passed this women reservation bill in 2010. But still that bill has not become an act, sir. Sir, women, you will be astonished to know, sir, women represent 10.5% of the total members of the Indian Parliament. It is the latest. What is women representation in Rajya Sabha and in Lok Sabha, sir? And in the legislative assemblies across all the states, it is a pitiable 9% only.
If you take into consideration the human representation in all the assemblies together, it is hardly 9%. And it is not my report, it is the report of Election Commission of India, sir. Sir, even in Muslim countries, those who are considered to be very conservative people, even in Muslim countries, human representation is much more than what we have here. And even Pakistan and Bangladesh, two Muslim-dominated countries, they have passed the Human Reservation Bill Act. But we are reluctant. Why? On the one hand, we say of human emancipation. On the one hand, we say of beti badhao, beti bachao. On the one hand, we say of bringing the women to the mainstream of the society. But still we refuse to give them their political right. Why? It was done by them also. It is being done by these people also. So why not this government is bringing this bill? What prevents them? So this is, I'm sorry to say, this is just hypocrisy. So I urge upon this government, it is high time, please bring this bill of human reservation. Sir, your time is over, and I'm coming. also concluding, sir. Yes. Very shortly I'm concluding. Give me 2-3 minutes more time, sir. Sir, one important thing I want to say, that Odisha is a cyclone-prone state. Natural calamities all the time hitting Odisha. You will be surprised to know, during the last 100 years, we have been hit by natural calamity for more than 90 times. Flood, drought, cyclone, super cyclone, and that is devastating our economy. That is devastating our economy. So we have been requesting, our Honorable Chief Minister Naveen Patnaik has all the time requested the central government to give a special category status to states like Odisha. If not special status, at least a special focus category status to Odisha, and treat us as part of the northeastern states and the Himalayan states, and give that economic benefit to the state like Odisha that is not being heeded by the central government so far, sir. So, sir, last point I will say, sir, about federalism. This is a federal country. Our constitution provides for federalism, sir. But we feel, this House knows it, in every bill, there is one or two provision taking away the right of the state government. What type of federalism this is, sir? And the latest decision the government has taken, that at any moment, central government can withdraw any IS officer from any state without the consent of the particular state. What type of federalism this is? What type of federalism this is? So you are not strengthening the federal character of our constitution of our country, we are weakening it. So therefore, my submission to the central government, kindly desist from doing this. This is a federal country, and federalism is our essence. You can't go away with this. So therefore, sir, if we want to take this country unitedly, if you want this country to progress, develop unitedly, if you want to take all the states to the mainstream of development of this country, don't eschew the principle of federalism. With this, sir, I, in spite of the fact that there are few contradictions in the speech of the President, करनी और कथनी में बहुत फर्क नजर में आता है. In spite of that, I support the motion of thanking the President on his address to the joint session of Parliament. Thank you, sir. Thank you, Prasanna Acharya ji. The next speaker, Shri K. Somu Prasad. I think he is in Lok Sabha chamber. I am in Lok Sabha. Lok Sabha, sir. Yes, sir, please. Thank you, sir. The Honorable President, in his speech, tried to sketch a picture of a colorful and bright present and future India. According to him, India is a fast developing nation without poverty, malnutrition, unemployment, illiteracy, etc. As per his version, the Indian citizens are living in a semi-paradise. And when the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji complete his tenure, India would become another paradise. But what is the reality, sir? It is far away from the sketches.
The presidential address does not narrate the real picture of the political, economical, social realities of the country, sir. The content of the speech is nothing but the usual combination of high rhetoric, unrealistic claims of the achievements of the government, sir. Sir, let me permit to record my reservations, disappointments, regret about the presidential address. Sir, when the Honorable President spoke about the handling of pandemic, he became eloquent. But we know the central government was an utter failure in handling the situation. Sir, how could we forget the floating dead bodies in the river Ganga? How could we forget the died innocent children and patients without getting oxygen and treatment at the proper time? How could we forget the long queue of the dead bodies in the crematoriums? Sir, the Honorable President said about vaccination. Sir, population-wise, we are the second largest country in the world. Administering 150 crores vaccines to 100 crore people within 1 year is not a big deal. It could have been finished earlier. Actually, the government failed to administer 2 doses of vaccine to the entire citizen within this period. Sir, the President praised the frontline workers of the pandemic. But what the government did for them? Had the government provided any security, any protection, any insurance facilities to their life, any incentive? Nothing, sir. Sir, when we go through each and every performance of the government, especially in the pandemic period, the government did not act properly. The government was utilizing the pandemic situation to implement its anti-people policies over them. The price hike of the petroleum products and the disinvestment of the public sector undertakings are the best examples, sir. The government is selling the share of the public sector undertakings which are running profitably and using the money to save private sector companies which are running in loss. Sir, who can support the price hike of domestic LPG and kerosene? Sir, the youth, especially the educated youth in India, are in severe frustration and mental agony because of the less job opportunities. Every day the unemployment rate is increasing. Disinvestment of the PSUs never help to create new job opportunities. Moreover, it would decrease the existing job chances. Sir, at the same time, the government is not ready to fill the existing vacancies. As per documents of the Government of India, a large number of posts in different ministries are kept vacant for the last several years. Total number of vacancies would come about 12.3 lakhs, sir. In the Defence Ministry itself, there are 2.4 lakhs civil posts are vacant, 1.28 lakhs in the Home Ministry, while it is 2.37 lakhs in the Railway. More than 7,000 vacancies are there in Health and Family Welfare Ministry. In the higher education section, it is 25,000 vacancies, sir. Sir, in the Central Police Force, the vacancies are 96,000. Sir, the disinvestment and the undeclared ban on appointment would badly affect the marginalized sections and their lists. The Honorable President again keep mum on issues like social justice and reservation in his speech. Sir, what is the contribution of the government in NRE section? The government is dividing the workers according to their caste and religion. Separate wages for SC, ST and general categories, sir. The workers who are working together in the same field are divided as ST, SC and general category workers. It is too bad, sir. The wages for SC, ST workers is not distributed properly. 3 months wages arrears are pending in Kerala. It should be cleared immediately, sir. Sir, there are lakhs and lakhs of contract workers and scheme workers working for several years. But the President in his speech, nothing mentioned about the regularization of the scheme workers. The Honorable President in his speech explained about the Prime Minister's Sabha Yojana. He said that more than 2 crore Pakka houses had been provided to the poor. I welcome, sir. But as per the socio-economic caste census, there are 24.39 crore households in India. Out of it, 17.91 crore are living in villages. Out of the 17.91 crore rural households, 56% are landless, sir. Let us examine the status of the SC and ST. 70% of the SC and 50% of the ST are landless. Sir, without a piece of land,
How could they construct a house? Land reform is the only remedy, sir. The President is keeping mum on this serious matter. Sir, disinvestment of the public sector undertaking badly affects the job chances of the weaker sections, especially SC, ST in the society. Reservation in employment is introduced only in government jobs and public sector undertaking. When a public sector undertaking becomes a private one, there ends the reservation in employment. Sir, in order to compensate the job loss due to the privatization, the demand for job reservation in private sector should be considered very seriously, sir. Sir, moreover, there are several government departments, including defense and judiciary, where the reservation is not implemented. Sir, without diluting the educational qualification or physical fitness, the reservation can be implemented even in defense department. Sir, in judiciary, also reservation can be implemented without diluting educational qualification and bar experiences, sir. Sir, as you know, in Kerala, we have a very good health care system up to the bottom level. There is a long-standing demand for Kerala, the demand of Kerala for aims. It is still pending without consideration, sir. Sir, as per our constitution, India is a union of states and the constitution gives much importance to the federalism. The constitution upholds the federal character, but the central government always imposes unilateral decisions on the state governments and curbs the state power. Sir, the governors appointed by the center most of the time are acting as political agents of the central government. The Tamil Nadu example is the nearest one, sir. That is, now the amendments in consent rule related to the deputation and transfer of IAS officers is one of the best examples, which reveals the intention of the center to interfere in the state administration. The center should withdraw from such unconstitutional movements, sir. Thank you, sir. Thank you, Soma Prasad ji. Now I request Professor Manoj Kumar Jha. शुक्रिया वाइस चेयरमैन साहब, थैंक यू सो वेरी मच। मैं अपने दल राष्ट्रीय जनता दल की ओर से राष्ट्रपति जी के महामहिम के अभिभाषण के प्रस्ताव पर अपना पक्ष, दल का पक्ष रखने खड़ा हुआ। माननीय वाइस चेयरमैन साहब, शुरुआत यूं हुई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बाद हमारे यहाँ इस रवायत की शुरुआत हुई। उससे पहले हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं थी। एक और ऐतिहासिक तथ्य जो मैं सदन के अपने साथियों के समक्ष रखना चाहूंगा कि 1950 में भी 31 जनवरी को ही अभिभाषण हुआ था। 31 जनवरी 1950, जब हमारे तब के महामहिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार से आते थे, देश के सर्वमान्य नेता थे, उन्होंने अभिभाषण दिया था। तो 72 वर्ष बाद ये एक संयोग है, लेकिन 72 वर्ष के अभिभाषणों के दायरे में अगर सर सोचे तो कई चिंता की लकीरें हैं, और चिंता की उन लकीरों को हमने अभिभाषण के पक्ष में, अभिभाषण के दौरान नहीं देखा। इसलिए मैं शुरुआत करूंगा कि बेवफा बावफा नहीं होता, बेवफा बावफा नहीं होता, वरना इतना बुरा नहीं होता। हमने तो सोचा था, बाद लुटने के ये पता चला कि रहजन रहनुमा नहीं होता। खैर, बहरहाल सर, मैं कुछ छोटी छोटी चीजें इस संदर्भ में रखना चाहूंगा। सभापति महोदय, मुझे पता है कि इस संदर्भ की गरिमा क्या है। राष्ट्रपति का अभिभाषण एक बहुत बड़ी चीज होती है, देश का एक ब्लूप्रिंट होता है, एक दिशा और दशा देने की कोशिश होती है। हम विपक्ष में हैं, लेकिन देश की दशा और दिशा से चिंतित अगर हम हैं तो अभिभाषण की पंक्तियों में भी वो चिंता की लकीरें दिखनी चाहिए थी। जब वो चिंता की लकीरें नहीं दिखती हैं तो एहसास होता है। कभी कभी मैं सोचता हूं माननीय सभापति महोदय कि महामहिम सोते जागते अपने सलाहकारों से बात करते, टेलीविजन देखते, सोशल मीडिया देखते, संवाद करते, क्या उनको नहीं लगता होगा कि देश के विजुअल्स बहुत अच्छे नहीं है? छात्रों पे आंसू गैस के गोले क्या मांग रहे थे? चांद नहीं मांग रहे थे, नौकरी मांग रहे थे। और वो 2 करोड़ वाला भी नहीं मांग रहे थे।
कह रहे थे बाकी वाला बचा हुआ दे दो, आपने लाठियां बरसाई। तो मैं ये सोचता हूं कि महामहिम के अभिभाषण में अगर इस तरह की चिंता ना हो तो सर भाषण ना कागज का पुलिंदा लगता है और अच्छा नहीं लगता है उसे कागज का पुलिंदा कह रहा। दूसरी चीज माननीय सभापति महोदय, कोरोना पर मैंने विस्तार से इस सदन में चर्चा की है। कोरोना को लेकर के भी जो चिंता आनी चाहिए थी वो नहीं आई। अब आइए अर्थव्यवस्था के बारे में मैंने कहूं, बजट को उसके लिए मैंने तय किया हुआ है, लेकिन मेरा मानना है कि सन 50 से लेकर अब तक किसी की भी सरकार हो, मैं जानता हूं ये लिखा कहां जाता है, लेकिन जहां लिखा जाता है मैं आग्रह करूंगा कि अगर हम सोच सके सत्ता पक्ष और विपक्ष, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण को दलीय दायरों से ऊपर कर दीजिए। राष्ट्रपति का अभिभाषण, कल को आपकी सरकार ना हो, ये मैं अपील बाकी लोगों से भी करूंगा जो सरकार में आएंगे कल को, कल नहीं आएंगे परसों आएंगे, कभी तो आएंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि सर अभिभाषण को एक नॉन पार्टीजन डॉक्यूमेंट बनाइए, नॉन पार्टीजन डॉक्यूमेंट। राष्ट्रपति देश के राष्ट्रपति हैं, उनके सरोकार में देश का सरोकार दिखना चाहिए माननीय सभापति महोदय। अब दिक्कत ये होती है ना माननीय सभापति महोदय कि अभिभाषण में सर्वेश्वर की एक लाइन थी सभापति महोदय, अगर तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। इसी यही रख करके बात मैं खत्म करता हूं इस संदर्भ के। सर पैरा 4 माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का है, जो कहता है रिमेम्बरिंग द पास्ट एंड लर्निंग फ्रॉम इट। सर इतिहास की एक अपनी स्मृति होती है और स्मृतियों का एक इतिहास होता है, और विश्व इतिहास गवाह है सर, जिस किसी ने भी अतीत की स्मृतियों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, उसको बदलने की कोशिश की, वो इतिहास के फुटनोट में चले गए। इतिहास नहीं बदला, वो इतिहास के फुटनोट में चले गए। नेताजी सुभाष बोस, अरे देश के नेताजी हैं, आपने उनको इंपीरियल कैनोपी में रखने का, अगर नेताजी कहीं से आ जाते हैं तो कहते कैनोपी मत रख भाई, दिलों में रख, दिलों में रख। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, मैंने नेताजी की चिट्ठियां पढ़ी हैं नेहरू जी के नाम, मैंने नेताजी की चिट्ठियां पढ़ी हैं बापू के नाम, मैंने नेताजी की चिट्ठियां पढ़ी हैं तमाम उस दौर के लीडर्स के नाम। कहां कद था नेताजी का, नेहरू जी का, बापू का, पटेल का, और विवेचना कौन लोग कर रहे हैं? मैंने इसी सदन में कहा था कि बौनी समझ के लोग लंबा इतिहास नहीं लिख सकते, लंबी 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 लकीर नहीं खींच सकते। एक बार चिंता करिएगा सर, मैं ये कह रहा हूं कि बापू के राम की संकल्पना करिए। अच्छा, इससे पहले एक हल्के में एक बात कहूं माननीय सभापति महोदय, मैं कभी कभी सोचता हूं 1952 में पहला चुनाव लड़ा हमने सर, 52 में हम पार्टीशन से निकल के आए थे, पीड़ा थी बहुत, लाखों लोग मारे गए उधर और लाखों लोग मारे गए इधर, लेकिन सर 52 का चुनाव हुआ था समावेशी विकास पर, रोजगार पे। 70 साल बाद हम चुनाव लड़ रहे हैं किस चीज पे? देख लीजिए। मुझे तो कभी कभी ताज्जुब होता है कि पाकिस्तान में चुनाव हमारे नाम पे नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ चुनाव पाकिस्तान के नाम पे होता है। अमन जी, अब मैं तो कह रहा हूं कि जिन्ना कहीं भी होंगे सोच रहे होंगे कि जो जीते जी मैंने नहीं पाया, भाजपा वालों ने मुझे मरने के बाद दे दिया। ये मैं समझता हूं हम सब के लिए सर चिंता का विषय होना चाहिए। सर मैंने कहा था कि बापू के राम, जब इतिहास की बात करते हैं सर, ये किताब है प्रार्थना खंड, बापू की किताब है, बापू की प्रार्थनाओं का संकलन है। मैं आग्रह करूंगा सब पढ़ें। जब नोआखोले से लौट के आए बापू, बहुत पीड़ा थी, उन्होंने अपना प्रार्थना बदल दिया। वो प्रार्थना भजमन प्यारे सीताराम की जगह भजमन प्यारे राम रहीम, भजमन प्यारे कृष्ण करीम। आप क्या कर रहे हैं? कृष्ण और करीम के बीच में कटीली दीवार लगा रहे हैं, राम और रहीम के बीच में दीवार लगा रहे हैं। ये दीवारें आज हो सकता है ताली दिलवा रही हो, आप मिट जाएंगे, ये दीवारें भी मिटेंगी, वक्त वक्त की बात है। बस एक बार सोचेगा जरूर, क्योंकि बापू पे माल्यार्पण आप भी करते हैं और बहुत, बल्कि आप चश्मे पे कर, आपने महदूद कर दिया। बापू का चश्मा लीजिए, बापू को चश्मे में मत रखिए,
ये मेरा आग्रह होगा। एक चीज तो ये थी सर, माननीय सभापति महोदय, कोविड के संदर्भ में मैं बोलूंगा नहीं, मैंने पहले ही कहा, इश्तेहारबाजी हो रही है। जो सरकारें, मैं सिर्फ केंद्र को नहीं कह रहा हूं, जो सरकारें कोविड के वक्त में नदारद थी, सोशल मीडिया गवाह है, वो सरकार 4 पन्ने का इश्तेहार दे रही है। अब पहले नेता लोग काम करते थे तो लोग कहते थे अरे सोच दम ईमानदार है, काम दमदार है। अब लगता है दूसरे का भरोसा नहीं, खुद ही छपवा दो, सोच ईमानदार काम दमदार। अरे लोगों को बोलने दीजिए। अब देखिए सर, दूसरी चीज कोविड के संदर्भ में मैं आपको कहूंगा, जब आप कहते हैं ना कि फलाने की तुलना में यहां इतने कम मरे वगैरह, 18 से तुलना करते हैं, सर जिन परिवारों के चिराग गुम हुए ना, उनके लिए मौत आंकड़ा नहीं है सर। मेरी बेटी की एक साथ में लड़की पढ़ती थी, 2 बेटियां थी, माता पिता 1 हफ्ते के अंदर दुनिया से चले गए। उसको नंबर बताएंगे हम कि ये आंकड़ा है तुम्हारे बाबूजी का, ये आंकड़ा है तुम्हारी मां का। ये नहीं होना चाहिए सर। इतनी तो संवेदनशीलता होनी चाहिए, सरकार किसी की भी हो सकती। सर समानता और बंधुत्व के संदर्भ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की चर्चा की गई है। सर मैं क्या कहूं, ये महादेव गोविंद रानाडे लेक्चर है। बस मैं कहना, बाबा साहब ने एक बात बार बार कही थी, वो कही थी कि भैया डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा खतरा है हीरो वर्शिप, उससे बचा लेना। लेकिन हमने क्या किया है, पूरी की पूरी डेमोक्रेसी को हीरो वर्शिप में तब्दील की है। आप कहिएगा पहले भी हुआ था, अरे जब पहले हुआ तो अच्छा नहीं था, अगर आज हो रहा है तो बुरा है। क्या हो गया सर, आजकल देखिए शब्दावली बदल गई है। वाजपेयी जी की सरकार एनडीए गवर्नमेंट कही जाती थी, या आपकी भी सरकार शुरू में जब बनी थी तो एनडीए गवर्नमेंट या बीजेपी गवर्नमेंट, अब कहते हैं मोदी गवर्नमेंट, अब हो गई ये केजरीवाल गवर्नमेंट। सर ये जो बीमारी है ना, पूरी सरकार व्यक्ति केंद्रित हो जाएगी ना सर, तो डेमोक्रेसी में दिक्कत क्या हो जाती है कि डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा खतरा कल्ट से होता है। इफ अ लीडर बिकम्स अ कल्ट, फर्स्ट द इंटरनल डेमोक्रेसी इज डिस्ट्रॉयड, then democracy everywhere is destroyed and everybody will suffer. आज भूपेंद्र जी ने किताब लिखी है राइज ऑफ बीजेपी। मैं समझता हूं बीजेपी कहीं अगर ऐसे हालात रहे, he has to write another book, fall of BJP. सर अब मैं ये कहना चाहता हूं, जब प्रजातंत्र का मूल है अपने साथियों के लिए आदर और सम्मान की भावना। प्रोफेसर जी बहुत अच्छा लगता आपका टाइम। सर मैं बस एक आध 2 मिनट लूंगा, उससे ज्यादा नहीं। सर मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इसलिए भी कि वक्त भी अच्छा नहीं चल रहा है। सर माननीय महामहिम कहते हैं प्रजातंत्र का मूल है अपने साथियों के लिए आदर और सम्मान की भावना। मैं आग्रह करूंगा सबों से, सिर्फ आपसे नहीं, हमारी शब्दावली क्या हो गई है एक दूसरे के लिए। हम युद्ध की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, हम चुनाव लड़ते हैं एक दूसरे के खिलाफ। किस तरह की शब्दावली का बिहार चुनाव में प्रयोग हुआ और किस तरह की शब्दावली का अभी चुनावों में प्रयोग हो रहा। अरे चुनाव कोई जीते, कोई देशद्रोही नहीं है इस देश में। हमारे आपकी संकल्पना में फर्क हो सकता है। ना मैं आपको देशद्रोही मानूंगा, ना आपको अधिकार देता हूं कि आप मुझे देशद्रोही कहें, क्योंकि तराजू पे तौलिएगा तो शायद चिंता आपको अपनी होगी, मेरी नहीं होगी। ये मैं कहना चाहता हूं। कहां से देशद्रोह का मामला आ गया। सर अब मैं एक एक कह करके खत्म ही करूंगा। मैंने पहले भी कहा था और दोहरा रहा हूं, सर ये जो पूरा का पूरा डिस्कोर्स है, विमर्श, सबको बैठ करके राजनीतिक विमर्श बदलना चाहिए, सब खत्म हो जाएगा सर। अब आइए पारा 15, 1 मिनट और लूंगा, 1-1.5 मिनट। फूड सिक्योरिटी को लेकर के बड़ी बड़ी बातें होती है। सर गोदाम से पेट तक की यात्रा सुनिश्चित नहीं करवा रहे हैं आप अन्न की, अन्न का भंडारण आपको है, लेकिन हासिल क्या है। 116 मुल्कों में आप 101वें नंबर पे हैं। भूखमरी, पेट की लानत सबसे बड़ी लानत होती है। अगर मंदिर भी बनवा रहे हैं तो उसमें प्रसाद चढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, अगर मजार पे जा रहे हैं चादर चढ़ाने के लिए पैसा चाहिए। लोगों के पास कुछ बचा नहीं है, ये चिंता नहीं होनी चाहिए। मैं जानबूझ करके प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात नहीं कर रहा, मैं जानबूझ करके डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि शांता छेत्री जी के सवाल को खारिज करके आपने विंडिकेट कर दिया कि उनकी भावना क्या थी। सर पैरा 70 आखिरी ही है, पैरा 70 में आते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत।
सर बिहार इसमें आता है या नहीं आता? या बिहार से 39 सांसद ले लिए, बिहार का काम खत्म? सर मैंने पहले भी कहा था, अब बिहार ज्वालामुखी के ढेर पे है। लालू जी के टाइम से उस सदन में बात शुरू हुई, फिर राबड़ी जी हमारे मुख्यमंत्री, अभी नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और पूरा भी भाजपा का बिहार विधानमंडल दल हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी से कहा कि प्रधानमंत्री जी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, ये दर्जा दीजिए। ये खैरात नहीं है। बिहार नहीं तरक्की करेगा तो देश की तरक्की में कभी 4 चांद नहीं लगेंगे, 2 चांद छूट जाया करेंगे, क्योंकि वो दोनों चांद पूर्वांचल से आएंगे। इसका आपको ध्यान रहे। सर मैं एक आखिरी कहूंगा, चंद्रशेखर जी के साथ बहुत लोगों ने काम किया है। उन्होंने एक बात कही थी बड़ी मार्मिक, रहबरी के सवाल में, घर के डिजाइन में आमतौर पर मतभेद हो सकता है सामान्य दिनों में, लेकिन जब घर में आग लगी हो ना तो डिजाइन में मतभेद नहीं होता है, सबको मिलकर आग बुझाना चाहिए। आज वो परिस्थितियां हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने भी असंतोष के लक्षण बताए थे बिहार जैसे राज्य में कि दिल्ली की नीति और नीयत की वजह से। मैं आपसे आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि महामहिम संज्ञान लें। और आखिरी सर एक ये किताब है, मैं आग्रह करूंगा कश्मीर के बारे में। मेरे दोस्त, मैंने बार बार ये कहा है कि कश्मीर जमीन का टुकड़ा नहीं है, जम्मू जमीन का टुकड़ा नहीं है, लद्दाख जमीन का टुकड़ा नहीं है, जिंदा लोग बसते हैं। अगर आप यहां से नॉर्मल बोलते हैं तो घाटी में नॉर्मल लगना चाहिए। और मैं इसलिए भी कहूं कि ये लाल चौक बहुत यंग लड़के ने लिखी है सर, बिहार का लड़का है, उसने ये बात लिखी है और कहा है कि नॉर्मैलिटी कैसे रिस्टोर की जा सकती है। सब पढ़ें। और आखिरी में सर 14 प्लीज कंक्लूड। 30 सेकेंड सर, नॉर्थ ईस्ट के बारे में चर्चा हुई, 14 सिविलियंस की बर्बर हत्या हुई। क्या वो भारत के नागरिक नहीं थे? क्या उनके लिए एक शब्द नहीं होना चाहिए था? इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभिभाषण सादा डॉक्यूमेंट ना हो, दर्द और पीड़ा हो, उसमें सब कुछ हो, ताकि वो हमारा अभिभाषण हो, आपका अभिभाषण हो, सबका अभिभाषण हो। बस इतना कह करके सर, जय हिंद। थैंक यू। नाउ द नेक्स्ट स्पीकर श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी। आपका बहुत बहुत आभार। मुझे मौका मिला है शिवसेना की तरफ से मोशन ऑफ थैंक्स के बारे में कुछ अपनी राय रखने का। बहुत ध्यान से हमने राष्ट्रपति जी की स्पीच को सुना और उन्होंने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे मुद्दों पे उन्होंने सरकार का पक्ष रखा, देश के सामने जो दिशा होती है वो रखने का काम किया। और उनके भाषण को सुनकर ऐसा लगा कि हमारे देश में अमृतकाल नहीं स्वर्णिम काल शुरू हो गया है। हमारे युवा बहुत खुश हैं, उनके पास रोजगार हैं। हमारी महिलाएं बहुत खुश हैं, उनके पास सुरक्षा है, पॉलिटिकली एम्पावर्ड हैं। ऐसा लगा कि हमारे आम आदमी को किसी तरीके की दिक्कत ही नहीं है। पर सच्चाई और हकीकत आज देश के सामने है और मैं उम्मीद करती हूं और मैं बिलीव करती हूं, स्ट्रॉन्ग नेशंस आर नॉट बिल्ट बाय इनसिक्योर गवर्नमेंट्स और इनसिक्योर लीडरशिप। Strong nations can only be built जहां हम अपनी अच्छाई बुराई सब चीज का ब्यौरा देश के सामने रख सकें। उन्होंने किसानों की बात की। उनकी भाषण से तो ऐसा लगा जैसे किसानों की आय दुगनी हो चुकी है। हम किस बात की चर्चा कर रहे हैं? खुश हैं किसान, खुशहाल हैं, प्रगति हो रही है देश की। पर सच्चाई ये है कि उस भाषण में एक भी बार राष्ट्रपति जी ने देश के सामने ये सच नहीं रखा कि 700 से ज्यादा हमारे किसान ने अपनी जान दी है। और इसलिए जान देनी पड़ी है उनको क्योंकि 3 काले कानून ये सरकार ने लागू किए, प्रजातंत्र के खिलाफ, हमारे संविधान के खिलाफ करके ये कानून पास हुए और इन्हीं किसानों ने उनको मजबूर कर दिया कि ये 3 काले कानून वापस लें। पर उस भाषण में कहीं भी उन 700 लोगों के बारे में, 700 किसानों के परिवारों को किसी तरीके के लिए शोक संदेश नहीं निकल पाया। हम भूल जाते हैं किस तरीके से लखीमपुर खेरी हो या हमारे दिल्ली में बॉर्डर पे बैठे हुए हमारे किसान हो, उनके ऊपर लाठी चलाई गई, कितनों को तो कुचला चल गया। पर वो मंत्री साहब के सुपुत्र
आराम से बैठे हैं और मंत्री जी आए दिन यूपी चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। दुख इस बात का होता है कि जो संविधान की रक्षा करने वाली पद होता है, राष्ट्रपति जी का पद होता है, फेडरल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर का मुद्दा भी उन्होंने उठाया, पर किस तरीके से रोज फेडरल स्ट्रक्चर का हनन हो रहा है, संविधान का हनन हो रहा है, उस पर चुप्पी बांधे रहे। पॉलिटिकल अपॉइंटीज को गवर्नर के रूप में भेजा जाता है। महाराष्ट्र हो, वेस्ट बंगाल हो, तमिलनाडु हो, वो लोग केंद्र सरकार का एजेंडा चलाते हैं और जो उनकी जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाते हैं। राष्ट्रपति जी ने युवाओं के बारे में भी कहा कि हमारे युवा प्रगति की ओर हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते थे 2014 से पहले, अभी थोड़े खामोश हैं। अगर हमारे युवा इतने खुश हैं तो मैं पूछना चाहती हूं, बिहार, उत्तर प्रदेश और सारे राज्यों में वो आज आक्रोशित होकर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? बेरोजगारी चरम सीमा पर है, पर केंद्र सरकार वाह भाई वाह लूटने में लगी हुई है। केंद्र सरकार पीठ थपथपा रही है कि रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुए हैं। आज ही मैं सवेरे सुन रही थी, इस बात पे चुप होती है। आत्मनिर्भर भारत करते करते रिकॉर्ड इंपोर्ट चाइना से आ रहा है। बेरोजगारी हमारे देश की चरम सीमा पर है। राष्ट्रपति जी ने महिलाओं के बारे में बात करी और हर बार सुनकर खुशी होती है कि महिलाओं के बारे में कुछ सोच है, सूझबूझ है सरकार को लेकर, पर हकीकत क्या है? वो देश की महिला और देश की महिलाओं से एक असुरक्षित माहौल जो बन रहा है उस पे के बारे में एक चुप्पी बंधी हुई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आज नारा बेटी भुलाओ प्रचार बढ़ाओ बन चुका है। रिकॉर्ड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, जिसकी मैं भी एक मेंबर हूं, उसमें कहा गया 85% ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो बजट है वो प्रचार में खर्च किया जाता है। मंत्री जी ने आकर कहा 85% नहीं है, 58% है। अरे 50% से ज्यादा है और यह हमें गंभीर तरीके से लेना चाहिए कि सच में हमारी बेटियां पढ़ रही हैं या नहीं पढ़ रही हैं। पर सच्चाई ये है कि कोविड कार्यकाल में डिजिटल डिवाइड हो, गरीबी हो और महिलाओं की प्रेफरेंस कम हो, बेटियों को स्कूल से निकाला जा रहा था, चाइल्ड मैरिजेस हो रही थी, मैल न्यूट्रिशन बढ़ रहा था, पर हमारी सरकार चुप्पी बांधे हुए थी। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया की बात होती है कि डिजिटल सेफ्टी, डिजिटल सिक्योरिटी की बात होती है, पर जब महिलाओं पे, खास करके किसी समुदाय की महिलाओं के साथ अभद्र टिप्पणी की जाती है, अश्लील बातें की जाती है, उनकी खरीद फरोख्त की जाती है, ये सरकार चुप्पी बांधे रहती है। सरकार से मैं कहती रह गई, निवेदन करती रह गई कि ये मामला महिला सुरक्षा का है, पर सरकार ने किसी तरीके का काम नहीं किया। और ये आज मुंबई पुलिस है जिसने महिलाओं को सम्मान देकर वो लोग जो इस तरीके का काम कर रहे थे उनको अरेस्ट किया। ऐसे रूल्स बनने जरूरी हैं। अगर हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो डिजिटल सेफ्टी ऑफ विमेन इन डिजिटल स्पेसेस होना जरूरी है और ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। हमें कहा जाता है सर, बार बार ही कहा जाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है, रिकॉर्ड जीएसटी हो रहा है, रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है, पर ये रिकॉर्ड जीएसटी किस आधार पे हो रहा है? एमएसएमईज को खत्म करके हो रहा है, पीएसयूज को कौड़ी के दाम पे बेचकर हो रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग को बढ़ाते हुए हो रहा है और गरीबी रेखा में और लोगों को ढकेल कर हो रहा है। और जो जीएसटी कलेक्शन भी हो रहा है, फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ जो स्टेट्स हैं उनको उनका जीएसटी कलेक्शन का राइट ड्यू भी नहीं मिल रहा है। महाराष्ट्र सरकार लगी हुई है पर उनको जवाब भी नहीं दिया जा रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है सर कि जब हम अभिभाषण करें, हम भाषण करें, हम इन सब मुद्दों की बात रखें। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहूंगी सर, देश के डिफेंस में, देश की नेशनल सिक्योरिटी को लेकर बाकायदा जितना खर्च किया जाए वो कम है, पर वो खर्चा कर कर, देश की टैक्स पेयर्स मनी का खर्चा कर कर
आप ऐसा स्पाईवेयर खरीदते हैं जो चाइना और पाकिस्तान की जगह देशवासियों के ऊपर ही इस्तेमाल करते हैं और किसी तरीके का संज्ञान भी नहीं लेते, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यूएसए हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इजराइल खुद हो, उन्होंने पेगासस पे जांच शुरू की है और बार बार कह देंगे सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत है, हवाला देते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत तो बहुत सारे मुद्दे थे, पर फिर भी जब यूपीए का कार्यकाल था उस पर चर्चा आए दिन पार्लियामेंट में होती थी, पार्लियामेंट को ब्लॉक किया जाता था। तो पेगासस पे चर्चा क्यों नहीं हो सकती, ये मेरी आपसे सवाल है। बिल्कुल होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात पेगासस में ये निकली है, जैसे मैंने कहा सारे देश उस पर इन्वेस्टिगेट करने को तैयार हैं। इजराइल खुद कह रहा है कि इस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। व्हाट्सएप और फेसबुक जो इनके यार हैं, उन्होंने भी कहा है किस तरीके से पेगासस का इस्तेमाल हो रहा है। सारे देश कह रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कह रहे हैं, रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स कह रही हैं, फोन मेकर्स बोल रहे हैं। एकमात्र हमारा देश है जो स्प्लेंडेड आइसोलेशन में खड़ा होकर कह रहा है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम महिलाओं के ऊपर पेगासस का इस्तेमाल कर सकते हैं। महिला जर्नलिस्ट हो, एक्टिविस्ट हो, विपक्ष की नेता हो, हम उन पे हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, हम पेगासस डाल सकते हैं, उनके फोटोज को इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका कैमरा यूज कर सकते हैं, उनका ऑडियो यूज कर सकते हैं। एकमात्र देश हमारा है जो एक्नॉलेज करने को तैयार नहीं है। और यहाँ पे जो हवाला दे रहे थे, डिफेंड कर रहे थे, शायद उनका भी नाम पेगासस की सर्वेलेंस रिपोर्ट में आया है। तो इट इज सच अ शेम कि आज उनको अपने आप को नहीं डिफेंड कर इस सरकार को डिफेंड करने पे मजबूर हुए हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगी कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है देश का जो सही दिशा और दशा है। आभार। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Thank you. Now I call upon Ravindra Kumar. 12:30 is... No, you can take your time. You can take your time. Sir, thank you, Deputy Chairman, sir, for giving this opportunity. The customary annual address of the Honorable President of India to the members of both the houses of Parliament has certain constitutional sanctity. Sir, the main stakeholders to ensure such developed and modern India over the next 25 years are the state government. Sir, situation is so bad in the state of Andhra Pradesh. The employees are not being paid in time. Pensions are out in state daily distress as they did not get their pensions in time. Poor and the weaker sections in mobilizing the resources to run the day-to-day governance. To give an example, the poor and the weaker sections have built small houses year back are now being faced to pay about 10,000 each other one-time settlements. This is being done by the ruling party, and that has promised during the election campaign of 2019 that liquor was